here we are given the numerical based on open circuit and short circuit test. We have to estimate the parameters of equivalent circuit of single phase induction motor from the following data. So we are given what? In open circuit test, we are given voltage as 220 volt and current 1.3 ampere and power as 60 watt. Same way we are given from blocked rotor test. We can easily call it SC test. So here we are given VSC is equal to 220 volt. Current is given as 5.5 ampere and power we are having 840 watts. So with the help of these sum notations, we get the clear picture what we have to do. And stator resistance from third test has been measured as that is R1 is equal to 11 ohm. DC रेजिस्टेंस है पर चूंकि स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा इतनी कम रेटिंग में, we can assume it as equal to AC resistance. So next what we have to do, we have to calculate all the equivalent circuit parameters. माने R1, X1, R2, X2 and Xn. So here we get overall parameters, like we don't have to bother about forward and backward field right now. So from SC test, we have to calculate first सबसे आसान resistance. तो overall equivalent resistance is equal to what? R1 plus secondary resistance referred to primary or rotor resistance referred to stator. So this can be taken out from power and the current square from the short circuit test. तो short circuit test में हमारे पास PSC है 840 watt and यूनिट्स यहाँ हम कैलकुलेशन में ट्राई करेंगे नहीं, और करंट है 5.5 एम्पियर होल स्क्वायर. So this will give you calculated value as 27.768 ohms. Okay, and here we are already given in the question DC resistance equal to 11 ohm. तो स्टेटर का रेजिस्टेंस जब हमारे पास है, R इक्विवेलेंट मिल गया तो हमें रोटर रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा, दैट इज R इक्विवेलेंट माइनस स्टेटर रेजिस्टेंस, और ये कितना हो जाएगा 27.768 माइनस 11 इज इक्वल टू 17.768 ओम्स. पर ये सफिशिएंट नहीं है, इसके बाद हमें जरूरत है X1 एंड X2 रिफर्ड टू प्राइमरी. तो उसके लिए सबसे पहले इम्पीडेंस निकालना होगा. इम्पीडेंस क्या होता है? टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट in short circuit test. They are 220 volt and 5.5 ampere. So here it comes as 40 ampere ohms. तो अब हमारे पास Z equivalent, R equivalent है, X equivalent that is leakage reactance of prime stator and rotor can be determined from these two as Z square minus R square rooted, which will give you answer as 40 square minus 17.768 whole square. This comes out to be 28.791 ohms. Okay, so we have got all the three equivalent resistance, impedance and reactance of single phase induction motor, but we have to separate them. रोटर रेजिस्टेंस तो सेपरेट हो गया, और लेकिन लीकेज रिएक्टेंस ऑफ स्टेटर और रोटर सेपरेट नहीं हुआ. जैसे मैंने सजेस्ट किया, कोई मेथड नहीं है जो इन दोनों को सेपरेट कर पाए, तो हम अज्यूम करेंगे कि रोटर लीकेज रिएक्टेंस और स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस बराबर हैं, जो कि एक्स इक्विवेलेंट के आधे हैं, और इसलिए हम इसको निकाल सकते हैं
28.791 को 2 से डिवाइड करके व्हाट वी गेट एज एन आंसर इज 14.395 ohms. तो अब हमारे इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर में वी हैव गॉट ऑल द स्टेटर एंड रोटर कंपोनेंट्स. अब हमारे दूसरा टेस्ट है ओसी टेस्ट, जिससे हम रिएक्टिव कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो कि रोटर के अक्रॉस लगा है उसको मेजर करेंगे. तो सबसे पहले हमें निकालना होगा टोटल इम्पीडेंस, दैट इज V नॉट बाय I नॉट, विच इज गिवन बाय 220 divided by 1.3 ampere. So Z naught comes out to be 169.23 ohms. अब हमारे पास मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस XM निकालने के लिए एक डाटा हो गया. इसको हम निकाल सकते हैं ओवरऑल इम्पीडेंस Z naught स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस R1 प्लस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फील्ड दोनों का मिला के ओपन सर्किट टेस्ट में आप इक्विवेलेंट सर्किट को याद कीजिए और इससे हम निकाल पाएंगे माइनस 2 into this x1 plus x2 divided by 2. Okay, this was 2 into 2 minus s, जहां s 0 हो रहा है तो this is becoming to r2 by 4 और यहाँ minus 2 x1 plus x2 referred to primary divided by 2. So this way, once we place all the values in them, we get xm as 293.907 ohms. तो ये हमारा शंट कंपोनेंट है रोटर के अक्रॉस जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है. सो वी हैव गॉट ऑल दीज x1, x2, we have got xn, we have got r1 and r2. So now you can plot the equivalent circuit of single phase induction motor and place all the values in that. So this is that simple by performing open circuit test and short circuit test to make the equivalent circuit of single phase induction machine.